ये बड़ी कवरेज अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। अमेरिका के लिए ऐतिहासिक तारीख और बाइडेन युग की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के लोगों ने आज अपने देश में एक नया सियासी सूरज उगते हुए देखने की तैयारी पूरी कर ली है। सीधे तस्वीरें आपको हम वॉशिंगटन डीसी से लाइव दिखा रहे हैं। ट्रंप काल गया, बाइडेन काल शुरू होने को है और उसी का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम वॉशिंगटन डीसी से आप लाइव देख रहे हैं। बाइडेन, जिनका अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल शुरू होने वाला है, और दूसरी तरफ ट्रंप, जो मायूस होकर व्हाइट हाउस से निकले और बाय बाय करते हुए अपने गृह राज्य फ्लोरिडा चले गए। हालांकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने भाषण में कहा कि उनका अभियान खत्म नहीं हुआ है। वहीं बाइडेन ने ट्विटर पर लिखा है कि अमेरिका के लिए नया दिन है। ट्रंप और बाइडेन के बीच तल्खियां इतनी ज्यादा है कि वो शपथ ग्रहण में शामिल न होकर वहां से दूर चले गए। वहीं बाइडेन ने ट्रंप की गैर मौजूदगी पर कहा कि वो खुश हैं, लेकिन एक और बात जो दिलचस्प होगी इस शपथ ग्रहण में वो ये कि पूर्व 3 राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिन राष्ट्रपति की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना था, सत्ता का हस्तांतरण होना था, वो डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यक्रम में नहीं मौजूद हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन आज शपथ लेने वाले हैं और उसी का कार्यक्रम आप इस वक्त देख रहे हैं। और वहीं कमला हैरिस, अमेरिका की पहली अश्वेत और महिला उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे और इसके साथ ही बहुत सारे और भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं कमला हैरिस ने। उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है वॉशिंगटन डीसी में और नए अमेरिका के फ्लोटर्स और पोर्टर्स की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। सभी मेहमान और जिनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, ये समारोह रखा गया है, वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। बाइडेन के साथ कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत और महिला उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगी। कोरोना पैंडेमिक की वजह से यूएस कैपिटल में 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों की हिंसा की वजह से साथी, और इस बार का शपथ ग्रहण बहुत मायनों में अलग है, जिसका जिक्र इस वक्त मैंने किया। सुरक्षा के चिंताओं के बीच इस बार अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी से जो गार्ड्स हैं वो ज्यादा हैं, मेहमानों की तादाद उससे कम नजर आ रही है। पेंडेमिक का भी असर है और सुरक्षा बहुत जबरदस्त है। इस बीच लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कमला हैरिस के लिए और साथ ही साथ जो बाइडेन के लिए, ये पूरा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरी बार अटेम्प्ट लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बन पाए हैं जो बाइडेन। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अभी शेष नारायण जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेष जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इन तस्वीरों पर आपका कमेंट। ये तस्वीरें बहुत, जो अभी आपने सुना सेनेटर वाउचर को, कि बहुत बड़ा इतिहास बदल रहा है। पहली एशियन अफ्रीकन अमेरिकन महिला प्रेसिडेंट हो रही हैं और जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी थी, लेकिन पैसे कम थे, उन्होंने कैंपेन अपना बीच में सस्पेंड कर दिया। जो बाइडेन, जो कि पिछले 48 साल से इस राजधानी में यही रहते रहे हैं, सेनेटर रहे, फिर उपराष्ट्रपति रहे और अब राष्ट्रपति होके आए हैं, तो बहुत कुछ नया है। और सबसे बड़ा नया ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले इन्हीं सीढ़ियों पर, जहां आप देख रहे हैं लोगों को, यहीं पे खून खराबा हुआ था। कुछ लफंगे आ गए थे, मारपीट करने आ गए थे। और पहली बार 133 साल पहले भी ये हुआ था कि राष्ट्रपति ने उसमें शामिल नहीं हुए थे सत्ता हस्तांतरण में। और आज श्रीमान जी वहां जाके धमकाते हुए गए हैं कि आप लोग पैट्रियट्स हैं और फिर हम जल्दी फिर अवतरित होंगे। तो जिस तरह से माफी दी है, जिस आदमी ने 6 जनवरी के हादसे के 2 दिन पहले कहा था कि आप वहां पे देखेंगे हेल विल ब्रेक आउट, स्टीव बैनन उसको माफी दे के गए हैं। तो अमेरिका का बहुत कुछ टेस्ट पे है, बहुत कुछ जो बाइडेन के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और लगातार 4 साल से झूठ बोलते रहे थे श्री डोनाल्ड ट्रंप। आज भी उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से हमने अमेरिका को संवारा है। बाइडेन की चुनौतियों का आपने जिक्र किया, उन पर मैं आऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अवतांश कुमार इलिनॉय से लाइव हमारे साथ है, साथ ही आदित्य रस्तोगी टेक्सास से लाइव है। आदित्य जी, अमेरिकन्स के लिए आज ये जो नया एरा शुरू हो रहा है, क्या मायने रखता है? और जो बीते कई वर्ष ट्रंप के उन्होंने देखे,
उनको भूल पाना क्या आसान होगा अमेरिकन के लिए? ये अमेरिकन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसा अभी बताया कि पूरा कंट्री काफी तरह से स्प्लिट है, अभी भी स्प्लिट है। तो आधे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समय था कि आधी कंट्री उनको प्रेसिडेंट नहीं मानती थी, आधी कंट्री उनके तरफ थी। तो जो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन है काफी स्प्लिट है। ऐसा स्प्लिट बहुत साल पहले यूएस हिस्ट्री में देखने को मिला है। और अभी ये जो स्प्लिट है यहाँ पे, जो एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज है, लेफ्ट साइड में आप देखें या राइट साइड में देखें, तो काफी गैप है। मिडिल में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जनरली पॉलिटिक्स होता है कि लोग मिडिल के लेफ्ट या राइट में रहते हैं। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे, लेफ्ट बिल्कुल ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट में है, जो राइट है वो एक्सट्रीम साइड में है। तो बीच में ज्यादा कुछ रहा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का अगर जहाँ पे देखें, ये 4 साल जो गए यूएस के लिए काफी अच्छे थे। कोरोना वायरस को अगर जो बीच में आके इम्पैक्ट किया, वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया, बट अदरवाइज यूएस इकोनॉमी काफी अच्छी चली है। टैक्स कट्स काफी हुए हैं, यहाँ के लोगों को काफी बेनिफिट हुआ है। चाइना को पुश बैक किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल में काफी कुछ किया। अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो 6 जनवरी को जो हुआ कैपिटल में, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसकी वजह से जो अभी उसका जो यहाँ पे कैंसल कल्चर चल रहा है यूएस में, उस वजह से अगर आप मेन स्ट्रीम के हिसाब से नहीं सोचते हैं, मतलब आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप वाइट सुपरमिस्ट हैं, तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ गया है, आपको बैन कर दिया। तो लोगों को काफी इससे प्रॉब्लम है। यहाँ पे व्यूज अभी भी ऐसा है कि लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी काफी चैलेंजेस है कि उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अभी जो नेक्स्ट जो 4 साल हैं, अभी आप कहिए 2 साल जो अभी बाइडेन के पास दोनों सेनेट और हाउस है, तो उनके पास 2 साल है जो उनका एजेंडा है, उसको जितना जल्दी बढ़ाएं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन यूएस में जो बदल तो हर 2 साल में चेंज हो सकता है। हर 2 साल में जो इलेक्शन होता है उसमें ये जो आपने एक बात कही कि अमेरिकन में एक खासियत है, या तो वो ट्रंप के साथ हैं या ट्रंप के खिलाफ है, और बाइडेन के साथ जो लोग हैं वो अब इस नए एरा में बहुत सारी चुनौतियों के साथ हैं। और इसी पर मैं आपको तस्वीरें, हमारे साथ अवतांश कुमार भी जुड़ गए हैं, उनसे जुड़ूंगी। लेकिन लेडी गागा जो इस कार्यक्रम में पहुंची हैं और नेशनल एंथम अमेरिका की वो गाएंगी, और उनकी मौजूदगी और कुछ चुनिंदा लोगों को ही इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। और ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs burst
तो लेडी गागा कैपिटॉल के पश्चिमी हिस्से में बने मंच से अमेरिका का राष्ट्रगान गाती हुई, और इसके साथ ही उनके साथ एक्ट्रेस और सिंगर जेनिफर लोपेज भी थी, और साथ ही सिंगर गार्थ ब्रुक्स भी उनके साथ राष्ट्रगान नेशनल एंथम अमेरिका का गाते हुए शामिल हुए। और साथ ही बहुत सारे कलाकार ऐसे भी रहे जो वर्चुअली, जो इस कार्यक्रम में तो नहीं पहुंचे लेकिन वर्चुअली इस नेशनल एंथम को गाते दिखे, और साथ ही इसे नाम दिया गया था सेलिब्रेटिंग अमेरिका। और इस कार्यक्रम में लेडी गागा की मौजूदगी और साथ ही साथ कमला हैरिस को देखकर भारतीयों को बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि भारत मूल की अमेरिका में पहुंचकर कमला हैरिस बनी है उपराष्ट्रपति, और महिला उपराष्ट्रपति पहली बनकर उन्होंने इतिहास दर्ज किया है। और हमारे साथ अवतांश कुमार जी जुड़े हुए हैं। अवतांश जी, ट्रम्पिज्म का एरा खत्म हो गया है, लेकिन बाइडेन का जो ये एरा शुरू हो रहा है, इसमें किस तरह की चुनौतियां हैं उनके सामने? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हम सबों के लिए बड़ा ही हर्ष का माहौल है, खास तौर से इंडियन अमेरिकन के लिए, जो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और ना अब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का हिस्सा हैं, दोनों से जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। और खास तौर से कमला हैरिस जी जो उपराष्ट्रपति बनी है, वो भी हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। यहाँ तक रही महिला की बात, वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में, भारत में तो पहले से भी महिला काफी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर रह चुकी हैं। जहाँ तक ट्रम्पिज्म की बात है, देखिए, जैसा कि अभी हमारे से पहले वक्ता बोल रहे थे कि 74 मिलियन लोगों ने जो वोट दिया, उनको आप आधी ओवरनाइट उनको आप नकार नहीं सकते हैं। वो कहीं ना कहीं तो हैं, और उनको काटने में समय लगेगा, उनको हटाने में, या उनको क्या कहते हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है, आउटराइटली निगेट करने में उनको समय नहीं किया जा सकता है। नहीं, लेकिन जहां तक बाइडेन साहब की बात है, बाइडेन साहब के पास काफी चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो उनको लेजिस्लेटिव चुनौतियां हैं। जो सेनेट है हमारा 50-50 है, ये नहीं, उनका ओवरराइडिंग बहुमत नहीं है, तो उनको। मैं आपको रोक रही हूँ, कमला हैरिस को सुन लेते हैं। Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Ladies and gentlemen, please be seated. तो कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। तो आज कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले चुकी हैं, और उनके नाम के आगे प्रथम जुड़ जाएगा। ये प्रथम मैं इसलिए यहाँ जिक्र कर रही हूँ कि सबसे पहले तो ये अमेरिका में इस पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला होंगी, और साथ ही प्रथम अश्वेत महिला भी, और इसके साथ ही भारतीय मूल से ताल्लुक रखने वाली ऐसी प्रथम महिला भी कहलाएंगी कमला हैरिस, जो अमेरिका में दूसरे ताकतवर ओहदों पर काबिज हुई हैं। जेनिफर लोपेज को आप देख रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए शामिल हुई हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि भले ही पेंडेमिक का असर है, लेकिन तमाम अमेरिकन्स, एक दौर हुआ करता था, एक वो दौर भी था जब चुनिंदा लोगों के घरों में टीवी होता था, और तब अमेरिका के इस
राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखा जाता था, लेकिन अब पेंडेमिक की वजह से इस पूरे समारोह को टीवी पर देखा जा रहा है। तो हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हुई और बाइडेन की इनॉग्रेशन सेरेमनी में उन्होंने भी परफॉर्म किया। तो ये कार्यक्रम चल रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इंतजार उस पल का जब बाइडेन शपथ लेंगे। कमला हैरिस शपथ ले चुकी हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस पूरे समारोह में मौजूद तमाम लोगों के चेहरे पर, और वो लोग भी मौजूद हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को टकटकी लगाकर अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। इतिहास एक नई करवट ले रहा है, अमेरिका एक नए आयाम को अपने साथ दर्ज करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और वो तस्वीर जब कमला हैरिस ने शपथ ली थी, कमला हैरिस से बहुत सारी उम्मीदें, और उन उम्मीदों पर कितना खरे उतरेंगे कमला हैरिस और जो बाइडेन, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी, डोनाल्ड समर्थकों ने जिस तरह से 6 जनवरी को जो कुछ किया वो एक काले अध्याय की तरह अमेरिका के पन्नों पर जुड़ गया है। लेकिन उस काले अध्याय से अब एक कदम आगे कमला हैरिस और जो बाइडेन कैसे अमेरिका को लेकर चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है आने वाले वर्षों में। तो जो बाइडेन आगे बढ़ते हुए और उनकी पत्नी जिल बाइडेन दोनों आ गए हैं, और वो अवसर जब ओथ सेरेमनी होनी है जो बाइडेन की। Joe Biden. Raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Ladies and gentlemen, please be seated. तो जो बाइडेन ने भी राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और अब इंतजार है कि वो अपने पहले राष्ट्रपति भाषण में क्या कहते हैं। इस बात का इंतजार सबको है, एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने एक लंबा संघर्ष किया और इस पद पर पहुंचकर एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ पूरा अमेरिका उन पर देख रहा है, उन पर निगाहें हैं। और साथ ही साथ जो बाइडेन के बारे में बता दें कि वो अपनी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी, साथ ही 6 नाती पोतों के साथ, पूरे परिवार के साथ एक तस्वीर उनके सामने आई थी सामने। वो अपने आप में बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। अब इंतजार उस पल का जब वो अपनी बात को अमेरिकन्स के सामने रखेंगे और कैसे एक कदम आगे अमेरिका को ले जाने का एक रोड मैप रखेंगे। क्या वो पेंडेमिक पर कोई बात रख सकते हैं या फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे, इस पर भी कोई विचार होगा उनका। And high honor
to be the first person to officially introduce the 46th President of the United States, Joseph R. Biden, Jr. Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, and my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far. But we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country has taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat.
To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured.
we prevailed. Here we stand, looking out on the great mall where Dr. King spoke of his dream. Here we stand where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand, across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand, like my dad, they lay at bed at night, staring at the ceiling, wondering, can I keep my health care? Can I pay my mortgage? Thinking about their families, about what comes next. I promise you, I get it. But the answer is not to turn inward, to retreat into competing factions, distrusting those who don't look like you, or worship the way you do, or don't get their news from the same sources you do. We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days, when you need a hand. There are other days when we're called to lend a hand.
That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future. And we can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been through so much in this nation. And my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all of those who we lost in this past year to the pandemic. Those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors, and co-workers. We'll honor them by becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind, and for our country. Amen. Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up, all of us? It's time for boldness, for there's so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best
They did their duty. They healed a broken land. My fellow Americans, I close the day where I began, with the sacred oath. Before God and all of you, I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. And I will give all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die on our watch but thrived. That America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our bearers, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America. Ladies and gentlemen, please be seated. Ladies and gentlemen, please welcome Garth Brooks to perform Amazing Grace. तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति का पहला भाषण, जिसमें उन्होंने अमेरिका को एकजुट होकर आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं हर अमेरिकन का राष्ट्रपति हूं और तमाम मन में जितने भी मतभेद हैं उनको भुलाकर आगे बढ़ने की हम उस विचारधारा पर बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। शेष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अवतांश कुमार जी हैं इलिनॉय से, लाइव आदित्य रस्तोगी हैं टेक्सास से। मैं सीधे रुक करूंगी। शेष जी, एक सबसे बड़ी बात जो दुनिया को एक संदेश है जो बाइडेन का, वो ये कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है एकता की, और उस एकता की कमी को महसूस कर रहे हैं जो बाइडेन, जिन्होंने बार बार इस बात को तरजीह दी है अपने पहले भाषण में राष्ट्रपति बनने के बाद। एकता के लिए आर्तनाद किया है, आज उन्होंने अपील नहीं की है। बाकायदा वो उनको मालूम है कि किस तरह से ये जो राष्ट्रपति अभी गया है, किस तरह से उसने अमेरिका को डिवाइड कर दिया है। व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को, क्लू क्लस क्लान वाले बदमाशों को, सबको उसने प्रोटेक्शन दिया है और पूरी तरह से रूरल वर्सेस अर्बन कर दिया है उसने, ब्लू वर्सेस, मतलब चारों तरफ से। और जो बात उन्होंने जो कही है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी जो है वो सबसे क्रूशियल है, डिसएग्रीमेंट को दुश्मनी नहीं मानना है, एकता, पूरा फोकस उनके एक्सेप्टेंस स्पीच का ये एकता है। और उस पर उनको आपने देखा है कि वो उनको जब उन्होंने कहा कि इसी देश में औरतों ने वोट के अधिकार के लिए मार्च किया था और आज उन्हीं में से एक महिला उपराष्ट्रपति यहाँ बन रही है, तो दिस इज बहुत बड़ा इतिहास। उन्होंने जब लिंकन को कोट किया, आज वो उन्होंने कहा ना कि अगर मुझे इतिहास याद रखे तो इसीलिए मैं एकता के लिए काम करूंगा, क्योंकि सोसाइटी बुरी तरह से डिवाइडेड है। अभी आपके अमेरिकन दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि वहां की सोसाइटी बुरी तरह से डिवाइडेड है। और वो जो अभी गया है, बताइए आप यहाँ पे इतना ओकेजन है, आप चले गए कि नहीं अभी साहब, आप एक्सेप्ट ही नहीं, आपके नियुक्त किए हुए जजेज, आपके अपने लोग, आपके How sweet the sound
that sea.